गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रोबेबिलिटी में लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में हमने देखा है, डिस्कस किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज नथिंग बट ओनली वेरी सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज वेरी familiar, very common in statistics. What was probability distribution? Suppose a random experiment is taken place and it is repeated n number of times. Then probability of success is calculated and then probability of not success. Suppose number of attempts, suppose a coin is tossed 3 times. X is the number of success. So it will take the values 0, 1, 2, 3. Maximum up to the number of attempts. Then we find out the probabilities of all values of X separately. फिर उसके बाद we draw a table representing the values of X and their corresponding probabilities. That is called probability distribution. Provided that the total probability, sum of the probabilities of all values of x should be 1. तो आज जो हम कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली यूज करके दिखाया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कितने केसेस पॉसिबल हैं 1 by 1 बना के दिखाते हैं, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो नंबर ऑफ केसेस डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो इधर हम आज डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके क्वेश्चन एंड बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल एक नया टर्म है, क्या होता है, व्हाट आर बर्नौली ट्रायल्स? सपोज देयर इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब डाई इज थ्रोन। एक हम एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करें, इफ अ डाई इज थ्रोन देन p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सपोज सक्सेस इज गेटिंग अ नंबर लेस देन 3. if a die is thrown getting a number less than 3 is success. तो कितने आउटकम्स आएंगे? 1 and 2. 3 से छोटे 1 और 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 2 upon 6, दैट इज 1 by 3. अब सुनिए, सपोज अ डाई इज थ्रोन 10 times. और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। तो x की वैल्यू क्या आएंगी? 0, नो सक्सेस, 1, 2, 3 अप टू 10। तो जब हम 10 बार एक डाई को थ्रो करें तो हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 सेम आएगा। तो ये पहली कंडीशन है। ट्रायल का मतलब क्या है? एनी अटेम्प्ट। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, इन एवरी अटेम्प्ट is called trial, and in every trial the probability of success should remain same. तो उस ट्रायल को हम बर्नौली ट्रायल की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरी बात, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फाइनाइट होना चाहिए। तीसरी बात, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम आना चाहिए। द ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक अटेम्प्ट का दूसरे अटेम्प्ट पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं कि हम किसी भी अटेम्प्ट को बर्नौली ट्रायल कब कहेंगे। तो बर्नौली ट्रायल आप समझ गए हैं, तो जरा देखो उसकी डेफिनेशन। आज का टारगेट है बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो द ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सैटिस्फाई दिस कंडीशन। पहली कंडीशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट होना चाहिए। हम n से डिनोट करेंगे क्वेश्चन में। फिर दे आर इंडिपेंडेंट। फिर ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स। जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी
वैल्यू सक्सेस और नॉट सक्सेस। नॉट सक्सेस को फेलियर कहेंगे। यहाँ P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। The probability of success in each trial that remains the same. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उन ट्रायल्स को हम बर्नौली ट्रायल की कैटेगरी में रखेंगे। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा मेन पार्ट है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि लेट अ बर्नौली trial in a random experiment, in a random experiment has n trials, the probability of success is P, और ध्यान रखिएगा P plus Q must be 1। हमने बोला कि यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी होना चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर, और जब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 ही आएगा। आगे हम देखेंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस, तो ऑब्वियसली आर लेस देन इक्वल टू एन आएगा, इज गिवन बाय, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to r, it is NCR, total n attempts are success, p to the power success to the power r and q to the power n minus r। हमने प्रीवियस क्लास में इसका यूज किया है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब मीन और वेरिएंस इस साल सिलेबस से हट गए हैं, तो फिर भी मैं बता दूं कि मीन of distribution u, this is NP, and variance of distribution it is NPQ। इनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ देखिएगा द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप एक चीज समझ गए होंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुल 3 चीजें हैं, एक n नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q अपने आप आ जाएगा, और r इज द रिक्वायर्ड। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय b stands for binomial, n stands for the number of trials, and p stands for probability of success। अगर कहीं पर ये एक्सप्रेशन लिखा है कि you should understand it is binomial distribution in which the number of trials is n and success की probability है q, ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आगे का रास्ता आपका खुल जाएगा। तो आज थ्योरी में बस इतना है, नथिंग इज न्यू रिपीटेड, सब रिपीटेड है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करेंगे, बट उसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि बर्नौली ट्रायल की कंडीशन फुलफिल हो रही है, उस सभी में होती भी है। अब हम एक्सरसाइज 13.5 को देखेंगे, ध्यान से देखना, बड़े आसान लगेंगे क्वेश्चन। A die is thrown 6 times, getting an odd number is success, odd number. What is the probability of 5 success, at least 5, at most 5? जरा देखो, here n is equal to 6, number of trials 6। अब आप p और q निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, वो सिंगल ट्रायल में निकालना है। तो हम लिखेंगे इफ
a die is thrown once, then P, probability of success. Success क्या है? Getting an odd number. तो सभी जानते हैं there are 3 odd numbers. It is 1/2. Therefore, what is Q? It is 1 minus P. 1 minus 1/2. So this is also 1/2. अब explain नहीं करना, mind में रखना है. If a die is thrown 6 times, each attempt is independent. Probability of success same आएगी. 6 times तो finite है. क्या लिखना पड़ेगा? This is a case of Bernoulli trials. Bernoulli trials. क्या लिखेंगे आप? इधर आइए. Therefore, using Px equal to R successes. So what is the probability? NCR P to the power R Q to the power n minus R. First case, we have to find out the probability of 5 successes. अच्छा एक बात सुनो. If a die is thrown 6 times, what is the value of x? Number of success? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये वैल्यू आएंगी x की, नंबर ऑफ सक्सेसेस. हो सकता है एक ही सक्सेस न मिले, और इन सभी की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आता है. ये लास्ट क्लास में देख लिया है आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. So here we have to find the probability of only 5. Out of 6 trials, 65 p to the power 5 q to the power 1. Total must be 6. So what is this? 65. It is 6. P is 1/2 power 5. Q is 1/2. So this is 6 upon 64. This is the probability of 5 successes. Out of 6 trials, 5 success, 65 is 1. पढ़ा है अपने 11th class के combination में. This is it. Now, coming to second part. क्या है? At least 5 successes. At least 5 को समझना है. And we will calculate, you should calculate always a smaller calculation. At least 5 success means these two. At least 5. So this is P x greater than or equal to 5. This means 5, कम से कम 5, minimum 5, that is 5 and more up to 6. So this is probability of x equal to 5 plus probability of x equal to 6. दो एंगल्स ये अभी कैलकुलेट किया है आपने. It is 6 upon 64. All success. फार्मूला वही लगाओ. 6c6. 6c6 p to the power 6 q to the power 0. So this is 6 upon 6 upon 64. 66 is 1. It is p to the power 6. 1/2 to the power 6. It is 6 upon 64 plus 1 upon 64 to the power 6. So this is 7 upon 64. 6 upon 64 plus 1 upon 64, like fraction, LCM 64, 6 plus 1 is 7. This is probability of at least 5 successes. Next क्या है? At most 5 successes. At most मतलब maximum 5. तो next part में whenever you calculate at most 6,
This is the target. Maximum 5 सक्सेस. तो 0 1 2 3 4 5 ये आपको कैलकुलेट करना है. काम लंबा हो जाएगा. मैंने बोला अभी आपको इन सब की प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कैलकुलेट कीजिए. 1 में से माइनस करिए, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा विच इज योर टारगेट. अभी देखो थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ at most 6 successes. This means probability of x less, sorry, at most 5, at most 5, x less than or equal to 5. ये मैंने बताया मैक्सिमम 5, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 5, तो 5 और उससे कम. तो हमें ये 0 से 5 तक कैलकुलेट करना है, 6 कैलकुलेट नहीं करना है. क्या करेंगे इसमें? 1 minus probability of x equal to 6. That's all. छोटा कैलकुलेशन पकड़ना है. It is 1 minus all successes p raised to the power 6. अभी कैलकुलेट किया है. This is 1 minus 1 by 64. This is 63 upon 64. So this is the technique to calculate the different cases of बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एन फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है और टारगेट फाइंड आउट करना है. बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा. अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 times. Getting a doublet is considered as a success. Doublet पेयर थ्रो कर रहे 4. Find the probability of getting 2 successes. ओके, चलिए सॉल्व करेंगे इसको. हियर नंबर ऑफ ट्रायल इज 4 और आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो आर इक्वल टू 2. ठीक, अब ट्रायल को और सक्सेस को देखिए क्या है. इफ अ पेयर ऑफ डाइस is thrown once, then P, it is probability of success, and success का नाम क्या है? Getting a doublet. Yes, you know, if a die is thrown, pair is thrown, then there are 36 outcomes, and out of the 36, how many doublets are there? 6. 1 1 2 2 3 3. So this will be 6 upon 36, that is 1 upon 6. Therefore what is Q? 1 minus 1 by 6, that is 5 upon 6. It's a simple question because this is involving a particular case. 2 सक्सेस ना कम ना ज्यादा. वो लिख दीजिएगा. This is a case of Bernoulli trials. Okay, using Px equal to R, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला NCR P to the power R Q to the power N minus R. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? Px equal to 2. आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. Very clear. Out of the 4 trials, 2 success to the power 2, Q raised to the power 2. Total must be 4. You know what is 4c2? 4 into 3 upon 1 into 2. Success की probability 1 upon 6 power 2. Q is 5 upon 6 also power 2. तो देखो 2 से ये कटेगा 3 into 6. अब ये आएगा
5 square is 25 divided by 6 and 6 raised to the power 4. So 6 cube आएगा. What is 6 cube? 216. So answer, the probability of 2 successes is 25 by 36. Here x will assume the value 0, 1, 2, 3 and 4. ये लिख लिया करिए आउट ऑफ द रिकॉर्ड. आपसे पूछा है 2 सक्सेस दिया हुए. सपोज एटलीस्ट 2 तो 2, 3, 4. 3 सक्सेसेस एटलीस्ट 3, 0 to 3. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ढेर सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, बट फिलहाल एक ही पूछा है आपके सामने. 4th क्वेश्चन देखें. 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली. थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने लेंगे with replacement. Find the probability that all are spades, only 3 are spades and none is spade. इसमें बोला नहीं है कि सक्सेस क्या है, बट आपसे पूछ रहा है स्पेड के बारे में, तो हम स्पेड को सक्सेस मानेंगे. 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, बट हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 draw. 1 draw. 5 cards are drawn 1 by 1 with replacement. Means a card is drawn once, it is seen and replaced in the deck. तो again 52 कार्ड हो जाएंगे. तो सेकंड ड्रॉ करेंगे, it will be free or independent from first. तो हम शुरुआत करेंगे. If a card is drawn, if a card is drawn from a set of 52 cards, then P, small p, probability of success. Success is defined by you getting a spade. So there are 52 cards. How many spade? 13. So it is 13 upon 52. That is 1 by 4. Therefore, what is Q? 1 minus 1 by 4. That is 3 by 4. Right. Here, N. 5 cards are drawn. So लिखेंगे, this is a case of Bernoulli's trial. Okay? So अच्छा, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये पॉसिबल वैल्यूज हैं. अब इनमें हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट केस है ऑल आर स्पेड, 5 दिया है. ऑल आर स्पेड तो 5. 3 आर स्पेड, ओनली 3. नन इज स्पेड, दैट इज 0. सिंगल केस से डिस्कस करना है. तो चलिए लिखेंगे, यूजिंग बाइनोमियल distribution P x equal to R. This is NCR P to the power R, Q to the power n minus R. First point, all should be spade, first part. So here P x equal to all 5 are spade. एक ही केस बनता है p to the power 5. बट अगर हम इससे अरेंज करें, 5c5 p raised to the power 5 q raised to the power 0. This will be p raised to the power 5. And what is p? It is 1 by 4.
to the power 5. This is 1 by 4 to the power 5, 512. 4 multiply 4 multiply 4 multiply 4 multiply. No. 1024. Yeah, yes. 1024. Yes. Second case. Only 3 are speeds. X equal to 3. Out of the 5 cars, only 3. So this is 5C3 success to the power 3 and q raised to the power 5. What is 5C3? 5 minus 3 is 2. 2 factors. 5 into 4, 1 into 4. 3 factor लेंगे 5 4 3 1 2 3 3 खत्म हो जाएगा. P is 1 by 4 power 3. Q is 3 by 4 power 2. Sorry, this is q to the power 2. Total power must be 5. Okay, so 2 से कटेगा. This is 10 into 1 by 64. This is 9 by 16. तो कैंसिलेशन तो हो रहा है, कर भी सकते हो, बट 10 into 9 is 90 divided by डिनोमिनेटर तो वही आएगा 1024. This is the probability of getting exactly 3 speeds. कैंसिलेशन कर सकते हो, किसने रोका नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू द वे ऑफ कैलकुलेटिंग. कैंसिलेशन ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड पार्ट, none is a speed x equal to 0. There is no success. 5 के 5 क्यों आएंगे? It is 5C0 p to the power 0 q to the power 5. This will be q to the power 5. What is q? 3 by 4 to the power 5. So 3, 9, 81. 243 upon 1024. This is probability of no success. या none is failed. तो ये है टेक्निक उस बाइनरी फॉर्मूले का. Whenever exact target is there, the question becomes very simple. Sixth question. A bag contains 10 balls, each marked with the digit 0 to 9. 10 बॉल हैं, हर बॉल पे 0 to 9 के डिजिट्स लिखे. ईच ऐसा नहीं है 10 बॉल, एक पे 0 एक पे 1 एक पे 2, ऐसा नहीं, हर बॉल पे 10 है. 4 balls are drawn 1 by 1 with replacement. वो मैंने लिखा नहीं है. What is the probability that none is marked with digit 0? इसको टारगेट करना है 0. तो कोई बात नहीं, देखो एक ही केस है इसमें. If a ball is drawn, then P, probability of getting the digit 0. Okay, it will be 1 by 10. Yes, there are 10 digits, 0 to 9, 10 digits. अगले 0 की बात कर रहे हैं. What is Q? 1 minus 1 by 10. It is 9 by 10. And number of attempts is also 10. This is a case of Bernoulli trials. So
distribution probability of R successes. This is NCR. P to the power R, Q to the power n minus R. Our target is for 0, सिंगल केस. तो देखो ना, हमने P को माना है डिजिट 0. क्वेश्चन है कि none of the ball is marked with digit 0. तो no ball. So this is 10 C0, P to the power 0, Q to the power 10. What is the meaning of Q? Probability of getting a ball which is marked the digit other than 0. 10C0 is 1. So it is Q to the power 10. Simple. What is Q? It is 9 upon 10 to the power 10. और आंसर भी इसी टाइप से लिखें, because 9 to the power 10, 10 to the power 10, 10 0 लगाने पड़ेंगे. That is unconvenient number. यही आंसर लिखिएगा. None ball is marked with digit 0. देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है. सपोज x has a binomial distribution. ये given binomial distribution है. So that x equal to 3 is the most likely outcome. Most likely means 3 successes का चांस मैक्सिमम है. ये प्रूव करना है. सॉल्यूशन देखिएगा. गिवन binomial distribution, it is b 6.5, and you know the binomial distribution is expressed as b and p. Therefore here n is 6 and P is 1 upon 2. Therefore, Q will be 1 minus 1 upon 2. That is 1 upon 2. It is given this is binomial distribution. इसमें लिखने की जरूरत नहीं है. This is the case of binomial. Here, अब x की वैल्यू क्या होगी? Successes. 6 tries are there. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the possible values of x. So we will use using P x equal to R. What is this? NCR P to the power R Q to the power n minus R. अगर बाइनोमियल थ्योरम आपने ध्यान से पढ़ी है 11th क्लास में तो याद होगा. द मिडिल टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज हाईएस्ट. गौर कीजिएगा. दिस आउटकम इज मोस्ट लाइकली ये पूछ रहा है. तो 3 इज द मिडिल टर्म. 3 इस तरफ, 3 इस तरफ. 3 इज द मिडिल टर्म. इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इसका कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है. 11th में पढ़ा होगा बाइनोमियल में. हम क्या करेंगे? सभी 7 वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है. जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, दैट आउटकम इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली. ओके. फर्स्ट P x equal to 0, that is no success. 6C0, P to the power 0, Q to the power 6. That is Q to the power 6. Q is 1 upon 2. Power 6. It is 1 upon 64. P 1 by 2 है, Q 1 by 2 है, तो ये वैल्यू जो है वो तो 1 by 64 ही आएगी. P is 1 by 2, Q is 1 by 2. टोटल पावर 6 आएगा. तो सारा जो मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड करेगा इस बाइनोमियल कोफिशिएंट पर. ओके. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस. 6C1 P to the power 1 Q to the power 5. What is 61? It is 6. P is 1 by 2. Q is
1 by 2, power is 5. So this is 6 upon 64. कैंसिल मत कीजिएगा. Next, third, P x equal to 2. 6c2 p to the power 2 q to the power 4. 6c2, 2 factors, 6 and 5, 1 and 2. P is 1 by 2 square. Q is 1 by 2 to the power 4. तो ये कर देगा 3, 15. This will be 15 upon 64. Fourth value, Px equal to 3. This is 6c3. P raised to the power 3. Q raised to the power 3. 3 factors. 6, 5, 4. 1, 2, 3. P is 1 upon 2. Q is 1 upon 2Q. 3 and 2, 6 करेगा. 4 and 5, it is 20 upon 64. कैंसिल और भी हो रहा है, बट नहीं करना है. Next, x equal to 4. 6c4 p to the power 4 q square. 6 minus 4, 2 factors, 6 and 5, 1 and 2. P is 1 by 2 power 4. Q is 1 by 2 square. What is this? 15 upon 64. रिवर्स होगा 20, ये मैक्सिमम, ये 15. नेक्स्ट 6 आएगा, लास्ट 1 आएगा. Probability of 5 successes. This is 6c5 p to the power 5 q to the power 5. 6 minus 5 is 1. 8 factor 6. 1 by 2 power 5 and 1 by 2. This is 6 upon 64. And last, x equal to 6. All 6 successes. It is p to the power 6. That is 1 by 2 raised to the power 6. Last will be equal to first. Second last equal to second. And you can see this is maximum. सभी के डिनोमिनेटर सेम रखे हैं. इसका न्यूमरेटर है 20 और बाकी सारे न्यूमरेटर 20 से कम है. क्या लिखेंगे? Since Px equal to 3 is maximum, therefore x equal to 3 is most likely outcome. This was the question. इसमें सभी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके कंपैरिजन करना है. दैट्स ऑल. 12th question. Find the probability of throwing at most 2 sixes. At most पे गौर करिए और 6 पे गौर करिए. At most 2 on 6 throws of a single die. सिंगल डाई को 6 बार थ्रो कर रहे हैं. 6 लाना है. एट मोस्ट 2 टाइम्स. क्वेश्चन समझिएगा, बाकी बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें. तो हम इसको देखेंगे. इफ a die is thrown once, then P, probability of getting 6, it is 1 by 6. Therefore
Q, that is 5 by 6. Okay. N equal to, throwing at most 2 6 6 throws. This is also 6. 6 बार. तो क्लियरली अब यहाँ लिखना पड़ेगा. This is a case of Bernoulli trials. Bernoulli trials. अच्छा एक बात, 6 थ्रो हो रहे हैं तो आपके पास x की ये वैल्यू जाएगी और उसने बोला एट मोस्ट 2 मीन्स मैक्सिमम 2 मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2. दिस इज योर टारगेट. मैक्सिमम 2 का मतलब है 2 एंड लेस देन 2. अगर आपसे पूछा जाए एटलीस्ट 2 तो 2 एंड मोर ये आएगा. हमेशा छोटा कैलकुलेशन करना है. ये छोटा है कि ये, दिस इज छोटा कैलकुलेशन, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सपोज आपसे ये पूछा जाए तो हम कैलकुलेट इसको करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा. हमेशा छोटा रास्ता लेना है. तो आइए, यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P, you know, x equal to R. This is NCR P to the power R, Q to the power n minus R. तो याद हो गया होगा. रिक्वायर्ड परमेबिलिटी जो है आपकी वो क्या है? एट मोस्ट 2 मीन्स मैक्सिमम 2, तो 2 से कम. इसमें आएगा P x equal to 0 plus P x equal to 1 plus P x equal to 2. x equal to 0 means no success. तो दिस इज P to the power 6 सीधा कर चुके आपको. P नहीं, सॉरी, Q to the power 6. 1 success 61. P to the power 1, Q raised to the power 5. 2 success 62. P raised to the power 2, Q raised to the power 4. Q raised to the power 6. What is Q? It is 5 by 6 to the power 6. 61 is 6. P is 1 by 6. Q is 5 by 6 to the power 5. 62, 2 factor, 6 5 1 2. P square is 1 by 6 square. Q is 5 by 6 power 4. कैलकुलेट करना है. हम क्या करेंगे? 5 by 6 to the power 4 कॉमन ले लेंगे. 6 5 4 एक कॉमन पावर है तो कैलकुलेशन होगा. तो 5 by 6 to the power 4 कॉमन आएगा, स्क्वायर बचेगा, दैट इज 25 by 36. ओके ओके 5 by 6 to the power 4 कॉमन जाएगा, एक पावर बचेगी, तो 6 into 5 30 upon 36. हम कैंसिल कर देंगे तो 5 by 6 बचेगा. मैंने बोला डिनोमिनेटर सेम रखो, लाइक फ्रैक्शन है. 2 से 6 काटो तो 3 आएगा. 3 into 5 15. ये तो बाहर चला गया. 6 स्क्वायर 36. कैंसिलेशन इधर भी हो रहा है, नहीं करेंगे. दिस इज 5 by 6 to the power 4 एंड देखो डिनोमिनेटर सेम, यही ऊंचाई है. इट इज 70 upon 36. This is the target. और इसी टाइप से आप किया करें. अगर मन कर रहा है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. तो यार आपने देखा
व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट आर बर्नौली ट्रायल्स। बड़े आसान क्वेश्चन थे। इसका यूज़ मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट क्लास में भी कराया था और आज मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर दिए। सिमिलर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उम्मीद है उनको आप कर लेंगे, आजकल में ज़रूर कर लेंगे। ये टॉपिक सिलेबस से हट के हैं, लेकिन इसका यूज़ आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं। बट इस 2021 के बाद ये टॉपिक सिलेबस में फिर आ जाएगा, इसलिए इसको स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।